हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जनरल साइंस के प्रिपरेशन के लिए आरबीएससी की जो क्लास 9th की बुक है, साइंस की बुक, उसके कुछ सोल्यूशन पढ़ रही थी। तो आई थॉट कि मैं साथ के साथ एक वीडियो बना देती हूँ, तो आप लोगों की भी हेल्प होगी। ऑल्दो आई हैव नॉट कवर्ड द ओल्ड चैप्टर्स येट, बट हाँ, कुछ इनिशियल 7-8 चैप्टर्स हो गए, तो आई विल स्टार्ट विद दैट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, chapter 1. It is about scientists and how the science evolve in the India. So question number 1, ये वही क्वेश्चन है जो बुक के पीछे है। तो क्लास 9th आरबीएससी इंग्लिश में मैंने बनाया है, यू कैन स्विच टू हिंदी ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 1, विच सब्सटेंस इज डिस्कवर्ड बाय द प्रफुल्ल चंद्र रॉय इन द इन्वेंटर ऑफ इंडियन केमिकल इंडस्ट्री। तो पहला तो इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के इन्वेंटर कौन है? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय। एंड उन्होंने कौन सा सब्सटेंस डिस्कवर किया? दैट इज मर्क्यूरस नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, बिरबल सारमी was related to which field of science? So it's the paleobotany. Question number 3, name the first Indian scientist who worked for the physical condition of stars. तो इसका आंसर हो जाएगा मेघनाथ साहा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज इंडियन लूनार मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च? तो ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। तो 2008 याद रखना, और उसमें 22 अक्टूबर, तो यह डेट है तो लर्न करना पड़ेगा। 22 अक्टूबर 2008। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी? तो इंडियन है सुश्रुत। ऑप्शन नंबर बी, सुश्रुत इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। एंड इसमें ऑप्शन वाले भी है और कुछ स्मॉल शॉर्ट आंसर्स थे, तो उनमें बिना ऑप्शन वाले भी, बिकॉज वो कैसे भी पूछ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द बुक रिटन बाय सुश्रुत संहिता। क्वेश्चन नंबर 7, विच मैथमेटिशियन गिव द टाइटल गणक चक्र चुरमान टू ब्रह्मगुप्त? ये टाइटल जो है वो ब्रह्मगुप्त को किसने दिया? भास्कर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज नेशनल साइंस डे? तो 28 फेब को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द बुक द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री? तो जिसको हम केमिस्ट्री का इन्वेंटर बोलते हैं, हिंदू केमिस्ट्री का या इंडियन केमिस्ट्री का, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, उन्होंने ही राइट की है ये बुक। तो हु रोट द बुक? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बॉटनी ऑफ द पास्ट पीरियड इज स्टडी? तो अभी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन कुछ था, दैट द ब्रांच रिलेटेड टू दैट, सो उसका आंसर था पैलियोबॉटनी। अब उस टाइम क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट्स अ पैलियोबॉटनी। मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव डन द गूगल, बट जिसने गूगल नहीं किया तो उसके लिए आंसर यह है कि जो बॉटनी की ब्रांच है पैलियोबॉटनी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इन विच बॉटनी ऑफ द पास्ट पीरियड इज स्टडीज, दैट्स अ पैलियोबॉटनी। Question number 11, which scientist gave the theory of ionization in physics? तो that is also मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा का पहले, इससे पहले नाम आया था, उन्होंने क्या किया था, दैट हु वर्क फॉर फिजिकल कंडीशन ऑफ स्टार्स। फिजिकल कंडीशन ऑफ स्टार्स के लिए भी मेघनाथ साहा। एंड देन अभी यहाँ पे वापस नाम आया है कि थियोरी ऑफ आयनाइजेशन इन फिजिक्स, तो स्टार्स की थ्योरी भी मेघनाथ साहा ने दी है, और फिजिक्स में थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन वो भी मेघनाथ साहा ने दी है। क्वेश्चन नंबर 12, India's first cyclotron was established under which scientist supervision? That's also मेघनाथ साहा। ठीक है, तो मेघनाथ साहा के 2-3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट तो हो गया, उन्होंने क्या किया है, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन इन फिजिक्स, फिर स्टार्स की थ्योरी दी है, और फिर फर्स्ट साइक्लोट्रॉन जो बना वो किसके सुपरवाइजेशन में बना? दैट्स अ मेघनाथ साहा। 3 पॉइंट हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु गेव बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स? तो दैट इज सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने दिया बोस आइंस्टीन स्टैट्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज वर्ल्ड योगा डे? अभी आई रहा है 21 जून को। व्हेन वाज मार्स ऑर्बिटल मिशन? इससे पहले हमने पढ़ा था लूनार चंद्रयान फर्स्ट मिशन, दैट वाज 22 अक्टूबर 2008। और अब हम पढ़ रहे हैं दैट, वो भी एक डेट थी, ये भी एक डेट है, तो दोनों मैं रिलेट कर रही हूँ कि वो था 22 अक्टूबर 2008 में। यहाँ पे मार्स ऑर्बिटल मिशन, इसका लॉन्च हुआ था 2014 में, और डेट थी 24 सितंबर। ठीक है, नाउ के चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल। तो इसमें जो भी होगा मैटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड बेसिक्स, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 9th का है, बट जैसे जैसे हम साइंस
इंजीनियरिंग करते जाते तो हमारा साइंस से थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो ये चीजें वापस से रिकॉल करना इज वेरी मच नेसेसरी. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड महर्षि कनाद गिव द आइडिया ऑफ परमाणु? दैट्स 500 BC. Answer A. Question number 2, what is the atomicity of oxygen in the ozone? Ozone is O3, so atomicity is 3. uh, Question number 3, which of the following substance is not a solid at room temperature? So it's oxygen. Oxygen remains as a gas in the at the room temperature. Salt, alum, sodium, all are the solid, but oxygen is not solid. Question number 4, the temperature at which matter from liquid state converts into the solid state. So liquid to solid, that is something which freezes, right? That is freezing point. क्वेश्चन नंबर 6, 5 स्किप किया है बिकॉज आई थॉट के वो उससे रिलेटेड नहीं है, और लाइक दैट्स आई स्किप फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर 6, हु फर्स्ट गेव द नॉलेज ऑफ परमाणु? सो महर्षि कनाद गिव द नॉलेज ऑफ परमाणु. what is the appropriate size of परमाणु? that 10 power minus 10 मीटर. सो परमाणु इन्वेंट किसने किया या फर्स्ट नॉलेज महर्षि कनाद ने दिया, और परमाणु की साइज कितनी है? 10 रेस टू पावर माइनस 10. Write the molecular formula of water, H2O, everyone knows it. Question number 9, a mixture of kerosene oil and water is what type of mixture? So kerosene oil plus water is a heterogeneous, right? दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो अगर दो डिफरेंट सब्सटेंस मिलाएंगे तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर. बाय विच मेथड वुड वी सेपरेट द वाटर फ्रॉम सैंटी वाटर? वाटर से अगर लाइक हम डेली रूटीन में भी पहले करते थे कि उसे रेत हटाना है पानी से, तो क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं उसको, फिल्ट्रेशन. What is the atomicity of oxygen in dioxygen? Dioxygen means 2. That's why atomicity is 2. Give an example of monoatomic molecule. It's an organ, AR. Question number 13. Name the state of matter in which shape and volume are definite. So it's a fixed shape and volume. That's a solid state. There are 3 states of a matter: gas, draw, and something. So Vashpa, so solid, liquid, and vapor. And write the full form of CNG, compressed natural gas. Question number 15. Name the process in which liquid is converted into vapor. So it's evaporation, Vashpa, something, Vashpikaran, right? So question number, chapter number 3, atomic structure. Question number 1. Plum pudding model of the atom was proposed by. Plum pudding model was given by Thomson. Neutron was discovered by, so 3 particles are electron, proton, and neutron. Neutron was invented by Chadwick. It 10 2 raise minus at yani आना चाहिए. So neutron was James Chadwick. Then electron was J.J. Thomson, and proton was Goldstream. तीनों याद रखना, electron, proton, neutron. Neutron James Chadwick, electron J.J. Thomson, and proton is Goldstream. The size of an atom is 10 power minus 8. Question number 4, the number of neurons in deuterium, that is an isotope of hydrogen. Isotope क्या होता है वो आगे मैंने लिखा भी है, तो उसका होता है मास दैट्स अ 2H1. सो आइसोटोप हाइड्रोजन, इसका प्रोटॉन हो जाएगा 2 - 1, दैट्स अ 1. सो आइसोटोप एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ही आइसोटोप है 1H1 और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम. सो atoms of the same elements having the same atomic number but different mass number are isotopes. और isobar कौन है कि atomic number तो different है but mass same है, that are isobars. What is the charge on neutron? Neutron पे कोई charge नहीं होता है. Who discovered proton? Proton was Goldstream. Write the value of Avogadro number 6.0022 10 power 23. Question chapter number 4, chemical bond and chemical equation. Symbol of sodium, Na. Question number 2, the formula of carbonate radical. Radical जिसमें negation में ऊपर power चलता है, that's a CO3, and carbonate for CO3 and radicals 2 minus. So its answer is B. The chemical bond present in sodium chloride, NaCl. It's an ionic bond. Question number 4, in the following which element shows variable valency? So it's a copper, because copper में valency 1 भी होती है और 2 भी होती है, CO2 plus and CO1. So it will be copper. Formula of calcium oxide, CaO. Answer number C. Question number 6, the inventor of the modern system of symbol. Modern होगा ये. Modern system of symbol for the element is Berzelius.
Answer option number A. Question number 7, which module in the following has covalent bond? So it will be H2O. Different kinds of bonds are there, covalent ionic. तो चाहो तो इसको डिटेल में आप गूगल कर लेना. Question number 8, F is the symbol of iron. Write the Latin name and symbol of potassium. Latin potassium for calcium, and the symbol is K. Write the formula of calcium carbonate. It's a CaCO3. Write the name of negative acidic radical. तो तीन चीजें ध्यान में रखती है, एक तो नेगेटिव होना चाहिए, प्लस वो जो पार्टिकल है, जो भी आप एलिमेंट लिख रहे हैं वो एसिडिक भी होना चाहिए नेचर में, और रेडिकल भी होना चाहिए. सो पोटेशियम फोस्फेट इज एसिडिक, एंड उसका रेडिकल क्या होगा, -3. दैट्स व्हाई PO4 -3. नेगेटिव एसिडिक रेडिकल PO4 -3. व्हाट्स एन एनियन? अगर कभी डेफिनेशन पूछ ले तो मैंने इसको इंक्लूड किया. व्हेन एन एटम रिसीव्स इलेक्ट्रॉन इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड एन एनियन. जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो उसको हम एनियन बोलेंगे, और उस टाइम पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी फ्रॉम द एनियन. वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स व्हिच कंबाइन डायरेक्टली और डायरेक्टली विद द वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. जितना हाइड्रोजन एटम कनेक्ट होते हैं उस एलिमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज द वैलेंसी. So for example, when we talk about the ammonia gas, that's NH4. So the valence, ammonia is NH3. तो हाइड्रोजन के तीन एटम कंबाइन हुए हैं, तो इसके लिए अमोनिया के लिए वो क्या हो गया, वैलेंसी 3. क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, concept of life. Question number 1, in universe life is possible on which planet after Earth? It's Mars. That's why Mars mission चल रहा है. Question number 2, which character among the following is not found in non-living things? Reproduction नहीं होगा, non-living thing है तो development नहीं होगा, growth नहीं होगा, तो all the above. Question number 3, due to Operian's hypothesis, the origin of life is divided into how many stages? That's a 7 stages. Question number 4, who gave the theory of biogenesis? It's a Francis Cordy. Okay. Option number B. Question number 5. The name of a planet similar to Earth discovered on 17th April 2014. It's a Kepler 186f. दो प्लेनेट डिस्कवर हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा भी सही. तो Kepler 186f अर्थ के सिमिलर है, जो कब इन्वेंट हुआ था, कब डिस्कवर हुआ था, 17th April 2014. Which scientist rejected the theory of spontaneous generation? Louis Pasteur. Question number 7. Name the two planets which show similarity with Earth. Kepler 186f जो previous questions में था, and Kepler 452b. ये दोनों numbers learn करने हैं, इनमें Earth जैसे similarities हैं. Who advocated the cosmologic theory? So it was advocated by Richter. Chapter 6, structure of living organism. Question number 1, which organelle of the cell is known as suicidal bag? Lysosome is the answer. Question number 2, which organelle of the cell is known as the powerhouse of the cell? It's a mitochondria. A. Which scientist discovered the nucleus? It's a Robert Brown. Option number A. Nucleus का discovery किसने किया? Robert Brown. Question number 4, in which phase of cell cycle DNA is synthesized? एस phase. तो सेल साइकिल की कुछ phases है, उसमें एस phase में हम DNA synthesize करते हैं. Question number 5, tissue which gives flexible strength to plant is collenchyma. I don't know what is this, but मैं भी learn कर रही हूँ. Collenchyma. Name the scientist who was who saw the living cell for the first time. Leeuwenhoek was the saw the first living cell for the first time. Leeuwenhoek is the answer. Question number 7, name any two unicellular organism. एक कोशिकीय, unicellular एक कोशिकीय. First is amoeba and second is Chlamydomonas. Okay. Name the largest cell of human body. Nervous cell. Right. Chapter 7, biodiversity. Question number 1, the highly advanced division of plant is angiosperm. So Avatri B something कहते हैं. Question number 2, in which plant seed vivipary is found? Helophytes.
Name the father of binomial nomenclature of classification. Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is who gave the nomenclature of classification. Does frog belong to which class? Frog belongs to class of amphibia. Amphibia, okay. Next one is chapter 8, major activities of living organism. Question number 1, the water in plant is conducted by xylem. Plants में water किसके द्वारा कैरी किया जाता है? Xylem. Question number 2, the water which a plant receives from soil से water कैसे आएगा? That's a capillary water. The stomata exchanges water, vapor and gases. तो stomata क्या exchange करता है? Water, vapor and gases. Question number 4, the conduction of food material is by the phylum, the phloem. The option number B. तो water तो xylem और जो food है that's a phloem. Question number 5, the respiratory pigment is that's a hemoglobin. Option number C. Question number 6, what is the higher side blood pressure of normal body? तो 120 से ऊपर 120 nm. Question number 7, which is not a function of the stomach? Storage of food, absorption, digestion and complete digestion of fat. So complete digestion of fat is not the function of stomach. Otherwise storage of food, absorption of food and digestion ये stomach की function है. Question number 8, the main example of fission is yeast. Fission means different part में small part में break होना. Ovules are arranged upon ovary. Option number A. Question number 11, the metabolic process in plants is dependent on carbohydrates. Question number 12, guard cells are found in leaf. Option number C. Guttation is seen when, question number 13, high absorption, option number B, high absorption and low transpiration. Question number 14, ureotelic excretion is found in human and frog. Option number D. Now chapter number 9, थोड़ा फिजिक्स की तरफ आ गए, बायो वाला पार्ट था. यूजुअली बायो मैं इतना फैमिली नहीं तो थोड़ा मेरे लिए वो टफ है, बट हाँ फिजिक्स आई कैन. सो चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड मोशन. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है ऑप्शन नंबर ए वर्क, बी टाइम, सी मास एंड डी इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. We should know the direction of vector quantity. So option number D is the correct answer. Question number 2, two forces 4n and 3n are acting on an object in opposite direction. The resultant force that will act on the object दोनों different direction में 4 minus 3 1n will be the answer. So option number C. Question number 3, the rate of change of velocity v by t is a, that's acceleration. Option number C, acceleration. Question number 4, the unit of momentum is nm, sorry, so it's a Newton meter. Question number 5, the velocity time graph of a moving object with uniform velocity. Uniform velocity कहाँ show हो रही है? So I can see the uniform velocity here, because as the time changes velocity remains constant. So option number C is correct. Question number 6, the momentum of a body depends on, so it's a mass of body. Question number 7, the relation between force and mass is F equals to ma. Option number A. Question number 8, unit of force is m into a. So m is kg, a is meter per second. So answer will be sorry, a is meter per second square. So the unit will be m for m kg into a meter per second square. So option C is correct. Question number 9, on accelerating a moving body, there is always decrease in the speed. When you accelerate the moving body, speed will be decreased. Question number 10, if a body is in a motion in a straight line with constant momentum and if no external force act on the body, then velocity remains constant. If your body is moving in a straight line with constant momentum constant है और कोई external force भी apply नहीं कर रहे तो velocity इसका constant रहेगा. Option number B. Question number 11, the inertia of a body depends on mass of an object. Question number 12, a body of mass 5 kg is moving in a straight line with an acceleration of 10.
then what will be the force? Again the same formula, F equals to ma, तो m 5 और into 10 तो 50 n आंसर होगा. Question number 13, the force exerted on anybody can change the motion of body, change the direction of motion and change the size of the body. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लास्टिक का बॉल, इस पे अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हो सकता है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, हो सकता है वो थोड़ा साइज भी डिस्ट्रॉय हो जाए, डिटोर्ट हो जाए. तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg is equal to it's a 9.n, so 1 kg is equals to 9.8 n. If the mass of an object is m, velocity is v, acceleration is a, then momentum is p equals to m. So momentum is p equals to mv. So ये 9 चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने कवर किए हैं. हो सकता है आगे वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर्स भी कवर करूं इफ आई विल गेट द टाइम. सो थैंक यू.